1970 until 1970, generally sodium hydrogen carbonates are used. Sodium hydrogen carbonate, NaHCO3. Sodium bicarbonate. Sodium bicarbonates are used as a antacids. Sodium bicarbonates are used as a antacids. यहाँ पे देख लो sodium hydrogen carbonates are used, are a mixture of aluminium and magnesium hydroxides are used as a antacid. लिख के रखने वाला point है ये. This is the important point. Yes. In olden days, till 1970, which drug is used as a antacid? That is, sodium bicarbonate or sodium hydrogen carbonate is used as a antacid. Yes. Continuation. Yes. Excessive hydrogen carbonate can make stomach alkaline and trigger the production of more acid. Hydrogen carbonate zyada ho gaya and it makes the alkaline solution. Alkaline ban jayega aur yahan pe acid ka production hoga. So these metal hydroxides are better alternates because being insoluble, they do not increase the pH and they maintain the neutrality. That's why metal hydroxides are used, but not sodium bicarbonate. After 1970, sodium bicarbonate is not used as an antacid. Yes. Yes. After a few years के बाद में यहाँ पे, yes, some drugs are used. They are called as histamines. Stimulates the secretion of pepsin and hydrochloric acid in stomach. Very, very important point. Till 1970 हम लोगों ने सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज किए थे. After a few days, yes, histamines are used. Histamines which stimulates the secretion of pepsin and hydrochloric acid in stomach. Yes, the name of the drug which is used is called cimetidine. Otherwise, it is also called as a Tegamet. Yes. This drug is designed to prevent the interaction of histamine with the receptor present in the stomach wall. ये जो cimetidine है, the drug which is called cimetidine, yes, this is Tegamet. It is to prevent the interaction of histamine with the receptor. It prevents the interaction of histamine with the receptors present in the cell wall, stomach wall. सिमिटिडीन क्या करेगा? हिस्टामाइन को रिलीज नहीं होने देगा. हिस्टामाइन को रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा? एसिड का प्रोडक्शन नहीं होगा, स्टिमुलेट नहीं होगा. यहाँ ऐसे किया जाएगा. ओके बेटा. देन लास्ट स्टेटमेंट देखिए. The importance of the drug was so much that remained the largest selling drug world until another drug that is called as Zantac. अभी भी यूज किया जाता एसिडिटी के लिए Zantac. यस बेटा, हो गया. यस, 3 ड्रग्स के नेम्स है. 3 ड्रग्स के नेम्स पे याद रखिए. सोडियम बाइकार्बोनेट. In olden days, sodium bicarbonate is used. Later, cimetidine, Tegamet is used, which prevent the interaction of histamine with the receptor. Later, the drug which is developed for antacid,
that is called ranitidine, or it is also called as Zentag. Zentag is a tablet which is used for acidity. Now, histamine is a potent vasodilator. Functions, various functions. It contracts the smooth muscles in the bronchi and gut, relaxes the other muscles. ये statement को अच्छा सा याद रख लीजिए, जो ऑलरेडी अभी मार्क किया गया है. अदरवाइज और एक बार मार्क कर रहा, चेक कर लो यहाँ पे. Histamines are the vasodilators. They contract the smooth muscles and bronchi and gut and relaxes the other muscles. Other muscles को relax करेंगे. Yes. Yes. Histamines, they are also responsible for nasal congestion. Yes. Associated with the common cold, allergic response जो होते, breathing लेने में problem होता ना थोड़ा सा, उसको बोलते हैं congestion, nasal congestion. Yes, it causes nasal congestion, which is associated with a common cold and allergic. आप लोग पोलन ग्रेन्स कुछ तो बोलते ना यार, उसकी वजह से आपको अस्थमा के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते ना. हाँ, हम उतना डीप में नहीं जाते, ये बायो के रिलेटेड में ही ज्यादा वर्ड्स रहते हैं इसमें. Yes, synthetic drugs. Synthetic drugs means which are synthesized in the laboratory. Yes, what are they? Dimetab. It is also called as brompheniramine and terfenadine. Seldane के नेम से बिका जाता. They are called antihistamines. These are called antihistamines. Yes, antihistamines है यहाँ पे. These antihistamines are used later. Yes, yes. यहाँ पे देखिए न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स. न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स, नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने वाले ड्रग्स कौन से है, क्या रहते हैं यहाँ पे. जनरली न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स के अंदर फर्स्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांक्विलाइजर्स. ट्रांक्विलाइजर, अनाल्जेसिक्स और न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स. Tranquilizers and analgesics or neurologically active drugs. These affect the message transfer mechanism from nerve to receptor. मैसेज पास करना है तो आपके मोबाइल से जा रहा, आपके फ्रेंड के पास पहुंच रहा, बीच में कोई तो इंटरमीडिएट होगा ना, जो आपका ऑपरेटर होता, एयरटेल वगैरह जो भी बोलते हो. यहाँ पे भी वही बात हो रही है यहाँ पे. These drugs affect the message transfer mechanism from nerve to receptor. बीच में नेटवर्क का प्रॉब्लम करेंगे इन लोगों ने. कौन? ट्रांसफ्लाइज, ये. यस, एक्टिव करेंगे, सॉरी. Tranquilizers are a class of chemical compounds used for the treatment of stress, mild or severe mental diseases. Yes, किसको है बोलो? ये वाला. Mild or severe mental diseases के लिए जो drugs which are used, they are called as a tranquilizer or analgesics. Tranquilizers are the class of chemical compounds used for treatment of stress or mental disorders के लिए use किया जाता. Yes. These drugs relieve anxiety, stress. Yes, irritation को कम करेंगे इन्होंने यहाँ पे. Yes. And these are the drugs. Yes, they are containing sleeping pills रहेंगे इसके अंदर. There are various types of tranquilizers. They function by different mechanism. For example, noradrenaline is one of the neurotransmitter which plays a role change in mood changes. मूड चेंजेस में काम करने वाला मेन कौन है बोलते बोले तो यहाँ पे नॉरएड्रेनालिन.
It is a neurotransmitter which affects on mood changes के ऊपर. If the level of noradrenaline is low, noradrenaline का composition or is level is low for some reason, then signal sending activity becomes low. Such type of persons, they are suffers with depression because of noradrenaline. Because of noradrenaline, if noradrenaline composition or level decreases, message sending capacity decrease होगा, then that person feeling with stress, depression. In such cases, antidepressant drugs are used. Antidepressant drugs are used. Yes, these drugs inhibit, these drugs जो बता रहे हैं यहाँ पे, generally these drugs inhibit the enzyme which catalyze the degradation of noradrenaline. Yes. Generally अभी जो यूज करने वाले जो ड्रग्स है बेटा, डिप्रेशन वाले ड्रग्स, yes, one is called iproniazid, another one is called as phenalzine. Yes, iproniazid and phenalzine are the drugs which are used for depression. डिप्रेशन के लिए यूज करने वाले ड्रग्स ये यहाँ पे. Yes, some tranquilizers which are named chlorodiazepoxide, mefloquine, all the mild tranquilizers relieving tension को relieve करेंगे, and the drug Econil are used for controlling the depression and hypertension. चलो ये बात को भी याद रखिए बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये, कंपलसरी क्वेश्चन आएगा, वन क्वेश्चन. हाँ, इसका नोट शायद होगा यार, मेरे को नहीं मिल रहा, देखता मैं. यस, नेक्स्ट वन. चलो और एक बार इसको लास्ट स्टेटमेंट को देख लीजिए. लास्ट, chlorodiazepoxide, mefloquine, another drug that is called as Econil. These three drugs are used. First two drugs, they are used as a mild tranquilizers which are relieving the tension or stress. Econil is the drug which is used to control the depression and hypertension. डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन को डिक्रीज करने के लिए ड्रग यूज किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड Econil. Yes. Derivatives of barbiturates or barbituric acid like veronal. Derivatives of barbituric acid like veronal, amytal, nembutal, luminol and seconal. Yes, all these are considered as tranquilizers. Names याद रहना जरूरी है. All these are used as tranquilizers. कौन से names क्या है बोलो? Names बोलिए. Veronal. Second one is called as amytal. Next one is a nembutal. Next, that is called luminol and seconal. Compulsory याद रखना है बेटा, ये रट्टा मार दो बस है. These are the drugs which are used as tranquilizers. Yes, tranquilizers. Yes, these are derivatives are called barbiturates. इनको ही barbiturates बोलेंगे. Barbiturates are hypnotics. Hypnotics means sleeping करेंगे, sleep, सो जाना है. Yes, barbiturates are hypnotic, that is the sleeping producing agents. Some other substances, tranquilizers are Valium and serotonin. Yes, Valium and serotonin.
Valium and serotonin are the drugs other than these above. Barbiturates. Barbiturates is nothing but sleep causing, yes, sleeping producing agents है यहाँ पे, hypnotic drugs है इन्होंने. Next one, that is called as analgesics. Next drug they are called as analgesics. Analgesics reduce or abolish the pain without causing any effect on central nervous system. Without causing any effect on central nervous system, analgesics reduces or demolish or complete pain को relieve करेंगे. Analgesics. Generally, these analgesics are two types of drugs are there. Non-narcotic drugs, narcotic drugs. Narcotic drugs means which are addicted. गांजा है, हम जो नेम से सुनते हैं उसकी बात कर रहा हूँ. हाँ, yes, heroin बोलते, caffeine. All these are addictive drugs. Addictive drugs generally they are named as addictive drugs. They are called as narcotic drugs, and non-addictive drugs are called as non-narcotic drugs. Yes. बोलते ना हम लोगों ने, कोई प्लेयर है, अरे नार्कोटिक टेस्ट में मिल गया, बोलते नार्कोटिक इज नथिंग बट एडिक्टिव ड्रग्स. हाँ, नहीं आपको अच्छे से मालूम है, हमारे नीट 21 वालों को फिर भी थोड़ा बोलना पड़ता. नॉन नार्कोटिक ड्रग्स, एनाल्जेसिक्स, एस्पिरिन, पैरासिटामोल is a class of non-narcotic drugs. Non-narcotic drugs, इसलिए तो मेडिकल शॉपों में इसको सेल कर रहे. हाँ हाँ, श्री दर्शन कल्याणकर क्या बोल रहे, संजय दत्त बोल रहे. संजय दत्त की जरूरत नहीं है, हमारे पास भी थे लोग. हाँ, नहीं मिले अभी दिस ईयर दे आर ना को, अब वो सब स्टोरी हमको कहीं को. हाँ, एस्पिरिन, पैरासिटामोल और द क्लास ऑफ नॉन नार्कोटिक ड्रग्स. They are a class of non-narcotic drugs. Aspirin is the most familiar example. Yes, प्रतीक करेक्ट आंसर दिया यार. राइट. मैं नहीं बोलता, मैं पढ़ता नहीं यहाँ पे. Aspirin inhibits the growth of chemicals known as prostaglandins, which stimulate the inflammation in the tissue and causes pain. It causes pain. अच्छा सा ध्यान से सुनिए, और एक बार बोलता मैंने. Aspirin is the drug. It inhibits the synthesis of chemical that known as prostaglandins. Prostaglandin is the drug which stimulates inflammation in the tissue and causes pain. These drugs are effective in skeletal pain such as arthritis में, due to arthritis में जो pain करेगा वो करेगा. Yes, these drugs are used. Aspirin it is mainly used as a antipyretic. Antipyretic is nothing but fever को reduce करने के लिए, fever. Yes, and reduces fever. And they reduces fever, antipyretic, and yes, preventing the platelet coagulation. Yes, because of its anti-blood clotting action. Because of its anti-blood clotting action, एक minute. Because of its anti-blood clotting action, yes, aspirin finds use of prevention of heart attacks. It is used in the prevention of. These all are considered as non-narcotic drugs. Non-narcotic means which are non-addictive. Non-addictive drugs. Aspirin है mainly. Aspirin की बात हुई यहाँ पे. हाँ, पैरासिटामोल को भी लिया गया था. Next, narcotic analgesic, narcotic drugs. Morphine, ये तो बहुत ज्यादा ये है. And many other
homologs when administered medical doses, ये छोड़िए, हाँ, yes, if the amount of this morphine is used in poisonous doses, this produces coma को करेंगे यहाँ पे, convulsions and ultimately death. Morphine is the drug. Morphine is a narcotic drug, sometimes referred to as opiates. ओपीएम के ट्रीज रहते हैं, छोटे प्लांट्स रहते हैं, बोलते हैं ना, बॉटनी में पढ़ते हैं आप लोग, हाँ, वहां से ही मॉर्फिन का एक्सट्रैक्ट करेंगे. यस, एंड दे आर ओपीएम पप्पी. अब हाँ, यस, नेक्स्ट ऑन कंटिन्यूएशन नीचे बेटा. These analgesics are cheaply used for the relief post-operative pain, cardiac pain, pains in terminal cancer, and in childbirth. पेन को डिक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है. कौन से पेन्स को डिक्रीज करने के लिए, देखिए यहाँ पे कौन से पेन्स को डिक्रीज करने के लिए यूज किया जा रहा, देखिए एक बार. पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद जो पेन्स होते हैं उसको, एंड लेटर इट इज यूज्ड इन कार्डियक पेन्स एंड इन टर्मिनल कैंसर पेन्स एंड ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ. जो पेन्स आएंगे, that pains are reduced by these narcotic drugs, that is morphine. हाँ. Now next one, yes, antimicrobials. माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने वाले एंटीमाइक्रोबियल्स. हाँ. Diseases in human being and animals may be caused by variety of microorganisms such as bacteria, virus, fungi, and other pathogens. Antimicrobials tends to destroy, prevent the development of, inhibit the pathogen action of microbes such as bacteria, antibacterial drugs, antifungal drugs, antiviral drugs. एंटीवायरल कोरोना के लिए एंटीवायरल यूज किया जाता. हाँ, यस, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, एंटीफंगल ड्रग्स, एंटीवायरल ड्रग्स. यस, एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स भी यूज किया जाता. Antibiotics are used as drugs to treat infections because of their low toxicity. हाँ, because of their low toxicity for humans and animals, antibiotics are used. Initially, antibiotics were classified